Hello, everyone. Good evening, everyone. Good evening to all my beautiful friends, my beautiful parents. Good evening once again. Namaste, Sat Sri Akal. Good evening. Please do join quickly. I can see so many of you have spare your time, taken out time for this workshop. So happy for all of you to be here. If you can hear me, if you can see me, please write down yes in the chat box so that I know that you can see me, you can hear me. If I'm loud and clear, please write down yes in the chat box so that I know that you people can hear me, you people can see me. Thank you everyone. Thank you Rohini, welcome dear. Welcome Amandeep, welcome Namita. I can see so many of you have joined. So happy to see you. Many of you must be interacting with me for the first time. Many of you must be watching me also for the first time. So my heartfelt thank you and welcome for this first session that you are going to be with me. So please spare 1 hour of this time and please free yourself. I need 1 hour or maybe less than 1 hour. So please grab some pen, paper from here and there so that you are there with me and I am there with you for the betterment of our future generation. You all know that why we are gathered here. We all are here for a very noble cause, for a very special reason, and that is parenting. And if I redefine, we are even more special. It becomes even more special for all of us when we become the parents of teenagers. So, my dear friends, all of us who are there in this journey all together right now, so very happy once again to see all of you. I would like all of you to, if you are comfortable enough, you can switch on your cameras so that we can see each other. It will be very good if you are comfortable enough. You can switch on your cameras and can see so that we can see each other. It will be a better connection. I'm so happy. Very nice. See, on this Sunday evening, you'll say, okay, the mode of communication will be Hindi English mix. I hope everybody here can understand Hindi also, thodi bahut. So if the medium of communication is open as to Hindi and English, that will be fine for all of you. Give me a thumbs up in the chat box so that I know that Hindi English mix will be fine. Great. Thank you. So happy to see you once again. You know that 90% of the people who are there in this world, they love to sit in their comfort zone all the time. वो कोशिश करेंगे कि हमेशा अपनी कंफर्ट, क्योंकि कंफर्ट जोन तो बहुत प्यारी होती है, इतनी अच्छी होती है कि आपको उसमें से निकलने का मन ही नहीं करता. And that is the reason I am very happy for all these learners who have chosen education over entertainment and rest right now. Sunday evening, चाय बनी हो, पकौड़े आ जाएं साथ में, तो सबको अच्छा लगता है यार कि बेडरूम में बैठ के आराम से चिल किया जाए. So, आप लोगों ने अगर एजुकेशन को चूज किया है, आप इस चीज को चूज किया है over your entertainment and over your rest, I am so proud for all of you that you have chosen this session. And there are many others who must be thinking, आज करते हैं, कहीं सोए रह गए होंगे. So it is even more, it is showing that you people are actually those people who are ready for learning, ready to achieve. So your mind is already tuned for such kind of vibrations that I am going to raise today. All right, the motive of parenting for all of us. When I say that what is the motive of parenting? अब आप सबसे कहूँ मैं motive of parenting क्या है? तो सबका एक ही जवाब होगा, motive of parenting is the betterment of our children. Right? And what is the purpose then? अगर हम purpose की बात करें, तो all over the world, purpose जो है parenting के वो 3 है. 3 purpose. First purpose is कि हमारा बच्चा खुश हो, happy, responsible and independent and a successful human being. इसके अलावा बहुत सारे purposes होते हैं, but in a nutshell, अगर हम उनको 3 categories में combine करें, तो all over the world, parents, they want these 3 things only from their children कि हमारे बच्चे happy individual land करें, responsible or independent ho, and they land up as a successful human being.
एंड ये सब कैसे पॉसिबल होगा? विदाउट येलिंग। तो कहते हैं कि हमको येल भी ना करना पड़े, हमको टेलिंग भी ना करनी पड़े, येलिंग भी ना करनी पड़े, स्कोल्डिंग भी ना करनी पड़े, बीटिंग भी ना करनी पड़े। इस तरह का कोई मैम हमें सजेशन दीजिए कि हमारा बच्चा हैप्पी भी हो, रिस्पॉन्सिबल भी हो, सक्सेसफुल भी बन जाए, विदाउट अवर टेलिंग, विदाउट अवर येलिंग, विदाउट अवर स्कोल्डिंग। So if I tell you that yes, my dear parents, this is very much possible, but it is only possible if you and I, we are together in this journey for 1 hour. 1 घंटे के लिए आपने कोई काम करना है तो उसको छोड़ दीजिए, फटाफट से आ जाइए स्क्रीन के आगे, so that we start with us, with the journey, right? If I tell you one thing, see, हमारे टाइम की पेरेंटिंग और अब के पेरेंटिंग में बहुत फर्क है। और अगर मैं कहूं कि आप सब अपने पुराने बचपन की दुनिया में जाएं, व्हेन यू वर अ टीनेजर। अब ऐसा मत कहना कि मैम हमें टीनेजर्स के बारे में हमें कुछ याद ही नहीं है। सबको सब याद होता है, वट एवर वी हैव डन, वट एवर हमने छुपाया, वट एवर हमने बताया, वट एवर हमने छुप के किया, हमें सब याद होता है। यू रिमेंबर, वी रिमेंबर एवरीथिंग, हमने क्या कुछ नहीं किया। if I take you back to the memory lane, अगर मैं पुराने आपको लेके जाऊं, and if I give you 2-3 minutes की याद करो अपनी उस टीनेजर की उस मेमोरी को जो आप आज भी भूले नहीं हैं, तो आई एम श्योर हर एक के पास कोई ना कोई 5-6, चलो 2-3 मेमोरीज ऐसी जरूर होगी जो आज भी एक मेमोरेबल इवेंट बनी हुई है, राइट? So the things are same, the hormones are same, the brain is same. हम भी टीनेजर थे, हमारे बच्चे भी टीनेजर्स हैं, तो अब ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आने लग पड़ी है? सही कह रही हूँ ना, हम भी तो टीनेजर्स थे एंड वी हैव लैंड अप एज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग्स। अब हम इतने परेशान क्यों हो जाते हैं इस स्टेज में? सी, आई अग्री, द थिंग्स आर से चेंज्ड, but many things have changed also. Many things are same, but many things have changed also. क्या चेंज हो गया? सोसाइटी चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक कर लिया। ये खतरनाक, सबसे खतरनाक काम जो हुआ है ना, वो यही हुआ है। टेक्नोलॉजी ने हर चीज अपडेट, एडवांस्ड वर्जन ऑफ एवरीथिंग इज अवेलेबल। बट डू यू थिंक दैट द एडवांस्ड वर्जन ऑफ पेरेंटिंग इज अवेलेबल? Now everybody will say, मैम एडवांस लेवल ऑफ पेरेंटिंग क्या होता है? ठंड रखो, ठंड, धीरे धीरे रे मना, slowly and slowly I'll unfold so many things today. See, everything, our phone also after 15-20 days, no, it will give you a reminder, update, update, update. So when everything is updated and our parenting styles, parenting techniques and parenting skills are not updated, वो पुराने तरीके से चल रही हैं, we are all stuck with the old parenting techniques based on old ways, my ways या guess ways. या तो मॉम डैड के तरीके से चलते हैं जैसे हमारे मम्मी पापा ने पाला था, या चलो उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी तो ये मेरा तरीका है, या फिर टोटली गेस वर्क, टोटली गेस वर्क। इमेजिन 25-26 साल का पेरेंटिंग जर्नी हम लोग गेस वर्क पे चलाते हैं, हम लोग ओल्ड टेक्निक्स पे चलाते हैं। So I agree, you all will also, I think you all will agree with me that reforms and some kind of skills and some kind of upgradation is required in this field also. और कभी कभी पेरेंट्स को फील होता होगा कि काश हमारी हैंड होल्ड करने को, काश हमारा साथ देने को कोई तो आए, कोई तो हमें बताए कि what is going on wrong and where the things are going on wrong. So my dear friends, I, Manindrajeet, take this opportunity to take you to the journey. If I tell you about myself, I am also a mother. और मैं ये कहूंगी कि हम सब एक ही बोट में चल रहे हैं अभी, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। सो आप जो फील कर रहे हैं मैं भी वही फील करती हूँ। तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत बहुत ज्ञान देने वाली हूँ, नहीं। वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, it is from my own experiences that I am studies and experiences that I have done. So I have realized that whatever I know today should be brought in on this platform, so all the other parents also should get to know about these kind of things, ताकि उनकी हमारी ये parenting journey एक easy journey बन जाए. So allow me to share my screen so that we proceed in this beautiful journey called as parenting. Just give me a second. All right, my dear friends, my dear colleagues,
So you all will agree with the fact that can you see me? Before I proceed, I would like to give you a small introduction of myself. I am Manindrajeet. As you can see, I was an educator and I am an educator as well, turned up into a life coach. So from the past 17 years, I have been helping thousands of parents and students in empowering them. How to empower them? By removing toxics from their lives. Toxics like less concentration, no communication, less kind of joyful nature, if they are not happy, if they're not healthy. So I try to remove just such kind of toxic things from their relationship, so as they land up as healthy human beings, who are better in communication, and they produce greater results. I empower parents and students with life and behavior skills, with tools and techniques, so that they have a wonderful future ahead. Life skills which are not taught in the school, so that the learners are less anxious and more motivated, less fearful and more confident, less distracted and more focused, less stressful and more joyful. So my dear friend, this is my small introduction, and I think this is enough to tell you that after leaving my job, I got to know about parenting, and I started my journey in parenting after leaving my job. So I have learned a lot, many things, and spent a lot of money in this area. And now when I think that I am capable enough to deliver and to take this parenting as a gift for my society, I have started taking these kind of sessions. So, all right, dear friends, tell me one thing. Do you all agree that the parenting, role of parenting, especially teenagers, is highly important? Just write down in the chat box yes or no. Do you think, I repeat my question, the role of parenting a teenager is very, very important? And do you agree that the role of parent is getting tougher and complex also these days? It is getting challenging, more and more complex and challenging. If your answers are right, then let me tell you, my dear friends, you are all correct. Yes, it is getting challenging. Yes, with the change in time, it is getting tougher, complex. Why is it so? Is because of this reason that let me take you to the history of our society. अगर आप हिस्ट्री की बुक्स खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि जब जब भी सोसाइटी में कोई सोशल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड बन गया हो, तो उसके लिए सोसाइटी ने हमेशा रिफॉर्म्स लाए हैं. Whenever any role in the society gets tougher, but it is important also according to the standard, qualification and norms of the society, changes, reforms, upgradations, they are brought in the society. And why? For the betterment. You see any field, आप किसी भी field को ले लीजिए, professionals, doctors, engineers, teaching even, and information technology, business, service industry, hospitality, transport, every industry, everything they have been upgraded. बहुत ज्यादा upgraded हुई है. और कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो upgraded नहीं हुई है? It is only parenting. It is only parenting. Right? So it becomes very important for all of us to upgrade ourselves in this field also. Right? So let's move further. Now tell me one thing, what bothers us the most as parents? हमें सबसे ज्यादा क्या bother करता है? जब हम एक teenager के parent बन जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्या bother करता है? Apart from physical changes, see, we are not going to discuss about physical changes. If we'll discuss about the physical changes, no, their hormones and everything, probably it will eat away a lot of time. So I have kept this topic, physical changes in teenagers, as a separate topic that we'll take some other time. आज हम बात करेंगे emotions and behaviors के बारे में, right? So apart from physical changes, what are the difficulties that worldwide
the parents they face. So you can see on the screen also. So when we talk about behavioral problems, you all will agree that wrong attitude, misbehavior, strange or unusual kind of a behavior, language becomes a big problem. They become disrespectful. Relationship also is a big problem. Then their communication, either they are communicating or they're not communicating at all. They become aggressive, arrogant. They are being alone most of the time. They use this, they try to stay alone only, अकेले रहना चाहते हैं. Careless attitude, jealousy, hyperactivity and hyper reactivity also. So ये कुछ एक emotional behaviors हैं जो हमें behavioral problems हैं जो teenagers के parents face करते हैं. उसके अलावा there are some psychological problems also, like wrong beliefs, overthinking or underthinking, emotional connection or emotional disconnection only, being secretive. They become very, very secretive, not only from their parents, from so many other things also. Secretively काम करना पसंद करेंगे. Confidence level goes down most of the times. Being introvert, they become introvert. They are confused what to do, confused with their body, confused with their own self, confused with their relationships. They become very critical also, and they become too judgmental. So if you are facing such kind of problems, so my dear friends, this workshop is for you. By the end of the workshop, you will get maximum answers कि वो ऐसा क्यों करते हैं, right? So allow me to move further so that we go deep. And you know, when I tell you these problems, जब मैं आपको इन problems के बारे में बता रही हूँ, तो मैं आपको ये बताते हुए अच्छा मुझे feel नहीं हो रहा है that unknowingly, unintentionally, unwillingly, our attitude, our language, our behavior is like this sometimes, that we land up giving them such kind of an atmosphere, it causes an irreparable loss for our teenagers. And this emotional damage cannot be seen. वो दिखता नहीं है. It seeps in deep inside the teenager. अंदर जाता रहता है बच्चे के, and it stays there with for about 20-30 years. Means a teenager cannot come out of that trauma, that behavior, or of that psychological problem. It stays for 20-30 years. So let's find out what is going wrong and where the things are going wrong. अगर हमें पता होगा ना कि प्रॉब्लम यहाँ है और यहाँ गलती हो रही है, तो हम उसको फिक्स अप बड़ी आसानी से कर लेंगे. So let's fix up, let's find out where is the problem, so that fix up the relationship, communication, and let's take our teenagers towards productivity and give them a very bright future as a gift. So let's make our home team strong. So here I go, my dear friends. Bad behavior is a learned behavior. Behavior and psychology is the sum total of environment and experiences. How? We will just discuss it. Okay, the first and the foremost important thing I'll tell you is using of offensive words. So my dear friends, my dear parents, अगर मैं आज यहाँ आपको कुछ एक ऐसी चीजें बताऊं, तो I hope you are not going to mind it, because when I say parents, when I say you, I am also there in between. मैं भी उस you में शामिल हूँ. I am also a parent. So ये सारी चीजें जो मैं आज लेके आई हूँ, ये कहीं ना कहीं हम सब करते हैं, but हमारा मोटिव गलत नहीं होता. We do it unconditionally. एक एग्जाम्पल देती हूँ, यूजिंग ऑफेंसिव वर्ड्स का. ऑफेंसिव वर्ड्स शुड नेवर बी यूज्ड, नेवर. 2 दिन पहले मैं पार्क में सैर करने गई और वहां पे मैंने 2 टीनेजर गर्ल्स को बैठे देखा. बोथ द टीनेजर गर्ल्स वर प्लेइंग अ गेम ऑन मोबाइल फोन, एंड आई कुड, मैंने फर्स्ट ग्लांस में ध्यान ही नहीं गया कि उनकी फिजिकल लुक कैसी है, पता ही नहीं मुझे. मैं आराम से देखा कि बाकी बच्चे खेल रहे हैं, वहीं 2 टीनेजर गर्ल्स अकेले बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रही हैं. द मोमेंट आई क्रॉस्ड 1 राउंड, जब मैंने जैसे ही 1 राउंड लिया, मैंने देखा कि उसमें से एक की मम्मी पार्क में आई और चीखते हुए उसने अपनी बेटी को सबके सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने ये बोला, तू बैठी रहती है, उठ उठ के तू भी खेल, बैठे बैठे देख तू कैसे मोटी हो गई है, बाकी बच्चे भी तो खेल रहे हैं, तेरे को उठ के खेलने में प्रॉब्लम होती है, बस इसका यही काम है.
कि ये घर में भी खाती रहेगी, बैठी रहेगी। अब पार्क में आई है तो भी देखो यहाँ पे खेल नहीं रही, बैठी हुई है और मोटी होती जा रही है। दिस वॉज द स्टेटमेंट शी सेड एंड शी लेफ्ट द पार्क। मम्मी तो बोल के चली गई, उसके बाद जो हुआ वो मैंने देखा। द गर्ल शी क्राइड। उसकी दूसरी वाली फ्रेंड उसका मजाक बनाने लग पड़ी। पार्क के 4 फ्रेंड्स और आ गए और उसको मोटी मोटी मोटी, तेरी तो मम्मी भी तुझे मोटी कहती है, ऐसे बोलने लग पड़े। इट वॉज सच अ सीन, आई कैन नॉट टेल यू, इट टच्ड मी। और मैंने उसी वक्त सोचा कि दिस थिंग आई एम गोइंग टू ब्रिंग, दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस वर्कशॉप। तो मुझे लगा ये बात मैं जरूर अपने पेरेंट्स को बताऊंगी कि कभी भी बच्चों को उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए, कभी भी, कभी नहीं करना चाहिए। आई वेंट टू दैट गर्ल एंड आई आस्क्ड हर, व्हाई आर यू क्राइंग, यू शुड नॉट क्राई। मम्मी ने बोल दिया तो क्या हो गया, तुम्हारी मम्मा ही तो है। कहती यही तो प्रॉब्लम है मैम, मम्मा ही तो है, अगर वो ही नहीं मुझे समझेंगी तो कौन समझेगा। इट टच्ड मी लाइक एनीथिंग, इट टच्ड मी कि मम्मी ही नहीं मुझे समझेंगी तो मैं दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करूंगी। यू नो, टीनेजर्स आर नॉट किड्स, they are adult like, they are not adults also, but they are adult like, so you need to treat them like adults, right? आप जैसा व्यवहार अपने साथ नहीं करना चाहेंगे या नहीं कोशिश करेंगे कि आपके साथ कोई और वैसा आपको बुलाए या करे, आपने याद रखना है कि वैसा टीनेजर के साथ भी आपने कभी नहीं करना। So never ever pinpoint whatever your child is, whatever, छोटा है, मोटा है, slow है, सुस्त है, काला है, गोरा है, कैसा मर्जी। आप देखो, this is in teenage, lot of hormones, they take over, they are going through a big influence of hormones also. So they'll have facial hair also. Some of the girls also, they develop facial hair, they have hair on their chest also, they'll have pimples on their face. So if you will keep on telling your children that you have so much of pimples, you look ugly, you need to understand. Rather than understanding, we give them offensive words. And not only we offend these offensive words, sometimes if the offensive words are given in public, in front of their friends, उनकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है। इस बिहेवियर से बच्चा हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। इस कंडीशन में लड़की रो पड़ी, लेकिन अगर इस जगह पे कोई और हाइपर रिएक्टिव बच्चा होता तो शायद अपनी मम्मी को उलट के जवाब दे देता। और ये वाले बच्चे जो होते हैं कभी कभी इस गिल्ट को अपने अंदर रखते हैं। दे गो टू स्कूल, दे आर इंडल्ज इन बीटिंग एंड बुलिंग द अदर चिल्ड्रन, क्योंकि वो जो गुस्सा अंदर भरा हुआ है उसको वेंट करने का मम्मी पे तो नहीं निकाल सके, तो जाके वो फिर बच्चों के ऊपर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। वाई? एंड समटाइम्स दे गो अंडर डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। दे एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑफेंसिव वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं बच्चे के साथ रेगुलरली, तो इसका असर क्या होता है? एक हेट्रेट, सेल्फ हेट्रेट पैदा हो जाती है बच्चों में, सेल्फ हेट्रेट। सो ईदर दे विल बिकम टू एग्रेसिव, या तो वो हेट करना शुरू कर देंगे सारी दुनिया को, जेलसी करेंगे, एंग्री रहेंगे, या दूसरी कंडीशन में बच्चे सप्रेसिव हो जाते हैं। दे गो इन अ शेल, उनको लगता है मैं सुंदर नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, आई एम नॉट प्रेजेंटेबल, I cannot present myself in front of anyone. Forget about the society. वो शीशे में भी नहीं देखेगा बच्चा अपने आप को, सेल्फ गिल्ट में चला जाएगा, सेल्फ हेट्रेट पैदा हो जाएगी। So in this case, it becomes very, 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 very important for us as parents कि हम इस बच्चों के साथ कभी भी offensive words यूज ना करें। What is the solution for this problem? Suppose आपने ऐसा हम कर दिया, सपोज आपने कर दी, बिकॉज टीनेज है, हम बहुत गलतियां कर चुके होंगे अब तक, तो व्हाट टू डू देन? हेल्प देम टू केयर देमसेल्व्स, राइट, एंड टू नर्चर देयर पोटेंशियल्स एंड यूनिकनेस। एवरी चाइल्ड, यू नो, बच्चों को भगवान ने ना सुंदर बना के भेजा होता है। हैव यू एवर सीन अ चाइल्ड हु इज नॉट बोर्न ब्यूटीफुल? दे आर बोर्न विद सेल्फ लव। हर बच्चा अपने आप को प्यार करता है, और टीनेजर में तो और ज्यादा प्यार करते हैं बच्चे अपने आप से। तैयार होना पसंद होता है उनको, शीशा देखना पसंद होता है, तो आप उसी चीज को किल मत करें, उसको बढ़ते दे आगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेक देम बिलीव दैट दे आर द बेस्ट एंड टेल देम दैट आप जैसे भी हो ना, मम्मा का राजा बच्चा हो या मम्मा की रानी बिटिया हो, बस आपका इतना कहना ही उनको बहुत शार्पन अप करेगा।
In one of my workshop, I'm going to tell that I'll tell you by the end of this session कि बच्चों में वो एक सेल्फ इमेज को अप करना किस तरह से किया जाए, इसकी एक पूरी प्रोसेस है, इसकी पूरी एक टेक्निक है कि अपने आप से प्यार कैसे किया जाए। इसकी एक टेक्निक को वो मैं आपको बाद में एंड में बताऊंगी. We are going to do a workshop also. In that workshop, I tell children, especially teenagers, how to develop that self love. मी को कैसे नर्चर करके अपना बेस्ट बाहर कैसे निकालना है. Okay, so first lesson for today, please do not use offensive words. Okay, so allow me to give you the second mistakes that unknowingly we do. That is toxic questionings. Now, when I say questioning, so if I give you an exercise to do right now, कि go back 15 minutes, 15, 20, 30 मिनट पीछे जाइए और सोचिए आपने अपने टीनेजर के साथ क्या बात की. 15-20 मिनट पीछे जाइए और सोचिए आपने अपने टीनेजर के साथ क्या बात की. आई एम श्योर, आप इसको लिख लो चाहे, आई एम 120% श्योर कि वो कोई ना कोई या तो आपने कॉन्वर्सेशन क्या की होगी. इट वुड हैव बीन अ क्वेश्चन और अ डायरेक्टिव और अ डायरेक्शन. कप वहां रख देना, मैं वर्कशॉप कर रही हूँ, तू क्या कर रहा है उतनी देर में, आई एम अटेंडिंग अ वर्कशॉप, व्हाट वर यू डूइंग ड्यूरिंग दैट टाइम, होमवर्क कर लिया, कल को स्कूल जाना है, बैग पैक हो गया, या डिड यू डू, योर एग्जाम्स आर गोइंग टू कम, योर एग्जाम्स आर नियर बाय, हैव यू डन दैट क्वेश्चन दैट यू हैव डन, या वो पकड़ा देना या वो रख देना. I am totally, because I keep meeting the parents and I am sure to start any conversation with a teenager we land up questioning. हम questions ही तो पूछते हैं. And that too, you know, when teenagers are teenagers, हमारे extra antennas खड़े हो जाते हैं. Extra, unwanted, self-made extra antennas. And those antennas will never allow your teenager to work. काम करने ही नहीं दोगे आप. You will not. We don't allow our teenager to perform. The moment they are performing something, your question will शुरू हो जाएगा. किससे बात कर रहे हो फोन पे? आज कौन कौन सी चीजें देखी नेटफ्लिक्स पे? Whom are you talking to? पार्क से इतनी देर से वापस क्यों आए हो? कौन कौन गया था आपकी पार्टी में? अच्छा, फिर पार्टी में क्या क्या किया? Questions, 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 questions. Every time we questions. अगर वो परफॉर्म भी करना चाहता है ना, इवन इफ दे विल परफॉर्म अंडर मेंटल प्रेशर, इंटरनली ही विल स्टार्ट डिसलाइकिंग यू एज मॉम एंड डैड. आप बताओ, आप उसको क्रिमिनल बना रहे हो ना, यू आर मेकिंग योर चाइल्ड अ क्रिमिनल. और क्रिमिनल बनाओगे तो बच्चा प्यार कैसे करेगा? फिर क्रिमिनल को प्यार थोड़ी करते हैं फिर. तो क्या चल रहा है, आप कैसे बैठ रहे हो, आप खाना क्यों नहीं ढंग से खा रहे, आप बात बात पे हंस क्यों रहे हो, या बात बात पे ऐसा क्यों कर रहे हो, टोकते रहोगे टोकते रहोगे टोकते रहोगे, परफॉर्म तो करने ही नहीं दोगे. यू नो, व्हेन अ चाइल्ड विल परफॉर्म, देन ओनली ही विल बी पॉलिश्ड. जब काम ही नहीं किया तो पॉलिशिंग तो खत्म ही हो गई ना. सो वी डोंट अलाउ चिल्ड्रन टू परफॉर्म. वी उनका काम करने के इनिशिएटिव जो है वो हम बंद कर देते हैं क्वेश्चन कर करके. सो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है माय डियर फ्रेंड्स. इससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है. वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, अपने पे शक करता रहेगा कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, मैं आई कैन नॉट परफॉर्म गुड, मैं कर ही नहीं सकता. देन यू विल से माय चाइल्ड इज सो बिग नाउ एंड हिज डिसीजन मेकिंग पावर्स आर सो लेस. अरे आपने उसको करने ही नहीं दिया, आलू प्याज खरीदने तो जाने नहीं देते. एंड देन यू वांट योर चाइल्ड टू बिकम अ सीईओ ऑफ अ बिग इंडस्ट्री. हाउ इट विल हैपन, टेल मी. आलू प्याज लाए, अगर बच्चा गलती करे, परफॉर्म किया उसने, आप कहोगे ले सड़े से अंडे ले आया तू, सड़ी ब्रेड ले आया, तेरे को पता नहीं लगता यहाँ पे एक्सपायरी डेट देखने. अरे आई लेट देम परफॉर्म. गलती की तो क्या हो गया, पॉलिशिंग तभी आएगी जब बच्चा गलती करेगा. कठेरे में खड़ा रखते हो हमेशा क्रिमिनल्स की तरह. सो व्हाट विल बी द बिहेवियरल आउटकम? द बिहेवियरल आउटकम विल बी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्रेशन. गुस्से में जवाब देंगे बच्चे आपको, क्या मम्मी आप तो हमेशा बात करते रहते हो, जाओ मैंने नहीं आपसे बात करनी. They will get irritated very soon. Unnecessarily, some of the children, they go in the shell and keep thinking, and they'll be lost in their own world, finding themselves lost. What will be the outcome of this toxic questioning? Outcome will be self-doubt, self-critic, too judgmental about things, and the child will land up as becoming a poor decision maker, and he will never take initiative in life.
आपने उसकी जो नॉर्मल इंस्टिंक्ट भगवान की तरफ से डाली हुई नॉर्मल इंस्टिंक्ट टू टेक इनिशिएटिव होती है वो भी खत्म कर दी. So the child will never take initiative. So my dear friends, I say that, see, I am not at all, please don't feel bad when I say such kind of things. We all are parents, and I understand we all land up asking such kind of things, doing such kind of things. Our intentions are not bad, I understand. Our intentions are not wrong. We do all these kind of things unknowingly, unintentionally. That is why such kind of workshops are there, so that this is called as upgradation. No, कि जो पुराना किया कोई बात नहीं, अनजाने में हो गया, आगे ऐसा ना हो, उसके लिए ये अपडेट हो रहा है आज, right? So let's move further and let's find out what is the next big mistake done by us. So solution for this toxic questioning is let them perform without pressure so that they get polished, right? So allow them to do. Don't ask too many questions to them. So यहाँ पे golden rule है, talk less, listen more. सुनो ज़्यादा, मुंह बंद रखो. Don't question, right? Okay, let's move forward. Another very important thing, comparison and labeling. Comparison, you need to understand, comparison and labeling is never healthy until it is done with self. अगर कंपैरिजन आपका खुद से है ना कि मैं कल से बेटर हुआ या हुई कि नहीं, then it is okay. But if you are doing a comparison with someone else, it is never healthy. It is never healthy. Labeling is like defined abusive statement. It's a full stop. The child will believe कि मैं ऐसा ही हूँ, तू slow है, तू सुस्त है, तू introvert है, तू slow learner है, you cannot come out of your shell, you are a bad boy, you are a bad girl. No, you should never do this. We compare our children with others with the objective to motivate them. And we called it as a healthy competition. But my dear friends, I tell you, it is not at all healthy. आप खुद के लिए देखो, अगर आपका बच्चा आपको कहे कि मम्मा आपको पता है मेरे फ्रेंड की मम्मा तो बहुत सुंदर है, वो तो बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, रोज जिम जाती हैं और उनकी स्किन इतनी अच्छी है, उनके बाल इतने लंबे हैं, आप तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, आप उनकी मम्मी की तरह क्यों नहीं बनते? Tell me one thing, do you feel good? Will you feel good? I'm sure your answer is no. Good कहाँ feel होता है? Bad feel होता है. Bad feel होता है ना? Same is true with the children also. Comparison is never healthy. It is never healthy. It is negative for rather it is negative for the receiver. The one who is receiving it will always be in an impact of a negativity only, right? So, when we label our children, we give them a label not only for 1 day, 2 day, 3 day. आप तो कह के खत्म कर देते हो. That child, तो मेरा बच्चा ना shy है, मेरा बच्चा shy है, वो इतना ज्यादा मिक्सअप नहीं होता, shy है. And not only you will tell this thing to your child कि तुम shy हो ना, इसीलिए पार्टीज में नहीं जाते, इसीलिए फंक्शंस में नहीं जाते. You will tell it to the relatives also. नहीं, वो नहीं मिलता, वो ना थोड़ा shy है. Then you will ढिंडोरा पीटोगे आप महल्ले, मतलब अपने पड़ोसियों में भी, नेबरहुड में भी, मेरा बच्चा shy है, मेरा बच्चा. Oh, that will echo so much in the child's head that it will become his own voice. I am like this. It will become his own voice. And that voice of mom and dad will stay with that teenager for 20, 30 years. आपने देखा होगा बचपन का टीनेजर शायद बच्चा शादी करने के बावजूद भी वैसे ही इंट्रोवर्ट रहता है, अपनी शेल से बाहर नहीं निकलता. उसको शेल से बाहर निकालने के लिए एनवायरनमेंट डिफरेंट चाहिए, मेंटरशिप चाहिए. It is so very dangerous. So don't get trapped into a loop of toxic expectations and through comparison and competition. And please, for God's sake, let's give a promise to each other that we will not label our children at all. If you will do such kind of things, then what will be the behavioral results? The behavior, it will show in the behavior of the children, like they'll be jealous of all the other children who are there in front of them. They'll develop a hatred, they'll become introvert and they will be less social, क्योंकि उनको हमेशा यही रहेगा मैं inferior हूँ बाकी बच्चों से. I cannot perform like others. So he will not be social, छुपा छुपा ही रहेगा. What will be the outcome of this in the longer run? Low self-esteem, will not take initiative again, will have this taboo with him for so many years, for ages and ages to come. So let's mend our ways
And what is the solution for this, my dear friends? Solution is keep realistic expectations from your children and be open to possibilities. Be open to possibilities. Okay, next one is, this is something my favorite. बड़ा मजेदार है ये. We listen to correct. बड़े हैं ना हम. So much of knowledge, so much of education, so much of experience. मैं ठीक, तू गलत. मैं हमेशा सही, तेरे को कुछ नहीं आता. I'll give you an example. सारे जने अब, you have to write that down in the chat box and tell me. I'll give you a situation. 15 years old young girl. रात को मम्मा ने उसकी लेट नाइट पार्टी अलाउ कर दी and she comes back home. और घर आके अपनी मम्मा को बताती है, मम्मा मम्मा should I tell you one thing? All the boys and the girls, they are girlfriends and boyfriends. सबके boyfriends and girlfriends हैं. तो मम्मा मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया और मुझे भी वो अच्छा लगता था. What will be your reaction? और आज मैंने उसके साथ कॉफी भी पी. 15 years of girl comes back from a party and tells you, mom, मेरे friends में सबके पास boyfriends and girlfriends हैं. आज मुझे जो लड़का पसंद था उसने मुझे प्रपोज किया and we went for a coffee. What will be your reaction? I'm waiting for everybody. सही reaction देना जो आप असल में करेंगे, right? ये नहीं कि hypothetically कोई सोच के बोले, नहीं. सही में जो आप सोचेंगे, जो आप करेंगे ना, वही करना. I'm sure most of the answers will be, आप पूरी बात ही नहीं सुनोगे. The moment the girl will tell you more about what happened that day, you will be in a reactive mode. आपके वो special antennas मैंने जिक्र किए थे ना, वो special antennas खड़े हो जाएंगे और आप क्या कहोगे? You will get angry or you will get what? You will start a conversation to correct that person immediately. मैं ये नहीं कह रही कि बच्ची ने अभी गलती की है. हम अभी गलती तक तो पहुंचे ही नहीं ना, पूरी बात ही नहीं सुनी. See, when everybody, all the teenagers are doing the same thing and you are the one person who is saying कि नहीं ये ठीक नहीं है, do you think your child is going to listen to you? The young adult is going to tell you, जाओ मम्मा, ये तो मम्मी ने ऐसे ही करना है. Do you think that advice of yours or ad voice जो आपने गुस्से में कर दी, वो कोई असर करेगी बच्चे पे? No, my dear friends, no. In that strong emotion, उस वक्त एक strong emotion के influence में, if you will react, overreact, then you are doing a big harm. अब ये situation बताएगी कि आगे आपका बच्चा आपके साथ communication रखेगा कि नहीं, emotional connect करेगा कि नहीं. This situation will tell. Beyond this, how you have reacted beyond this. Were you a good listener or not? If you are successful, then तो you are going to maintain a good relationship. और नहीं तो फिर काम खराब है. So my dear friends, approach यहाँ पे ये होनी चाहिए कि we have to listen. Again, I'll say you have to listen to the teenagers. जब बच्चे teenage में जाते हैं तो मैंने आपको क्या कहा है कि आपको अपना ये मुंह बहुत कम चलाना है, बंद कर लेना है. सुनना ज्यादा है और देखना ज्यादा है. Observant and listening should be more rather than reaction that you give from your mouth. It is not at all advisable. Okay, so your intentions of course again will not be bad. I understand intentions हमारी कभी भी बुरी नहीं होती, right? You might give them more than required or maybe you do it in a wrong way only, but it will never solve the problem. और इसका क्या फर्क क्या पड़ेगा? इसका बिहेवियर इशू ये आएगा कि लेस कम्युनिकेशन. बच्चा आपसे बातें छुपाने लग पड़ेगा कि मेरी मम्मी ने ना ऐसे रिएक्ट करना है, मेरे पापा ने ऐसे रिएक्ट करना है. आपको क्या लगता है आपका बच्चा करेगा नहीं? डर जाएगा आपसे. He will continue, she will continue doing more and more things. He'll experiment. अरे उसकी स्टेज एक्सप्लोरेशन की है. It's a stage of experimentation and exploration. He'll keep on exploring more and more things, but he'll be very selective now. उसको पता है कौन सी बात बतानी है और कौन सी बात छुपानी है. Do you want your child to hide things? नहीं. रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, whatever हो, whatever छी वाली बात हो, बच्चा भागता हुआ आए, सबसे पहले आपको बताए. करेक्ट हम बाद में कर लेंगे, कनेक्ट तो करो ना पहले. यही प्रॉब्लम है. वी डोंट कनेक्ट एंड वी रिएक्ट. करेक्शन पे ही हमारा ध्यान रहता है. सारा फोकस इज ऑन करेक्शन, नॉट ऑन कनेक्शन, राइट? सो व्हाट विल बी द
outcome of this? Outcome will be loss. He will lost the faith and trust in you. Emotional detachment शुरू हो जाएगी. The बच्चा will be, the teenager will be busy in their own world. Less connection and more of distraction, because nobody will be there to tell him what is right and what is wrong. आपसे तो वो बात ही नहीं करेगा क्योंकि आपने सारे doors बंद कर दिए. So the solution is communicate, always to connect, then to correct, later correction. Okay, right? Let's move further for the next one. Okay, now this is something very sensitive, right? Imposing your emotions on them. Many a times we impose our emotions on our teenagers, saying you are expensive for us. पापा मम्मी जो आपके स्कूल की फीस दे रहे हैं ना, ये बहुत महंगी पढ़ते हो, तुम हमें बहुत महंगा पढ़ते हो. We do so much for you. We don't have time for our own self. तुम्हारी वजह से ना हमें टाइम ही नहीं मिल पाता. You are a burden on us. Because of you, ये ऐसा हुआ. तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ. तुम्हारी वजह से वैसा हुआ. You know, my dear parents, एक successful person बनने के लिए, एक successful human being बनने के लिए सबको बोझ उठाना पड़ता है. तभी तो आप एक productive human beings कहलाते हो. दूसरों के लिए आसानी पैदा करोगे. That is why you are called as the head of the family, you know, earning member of the family, क्योंकि आपने दूसरों की लाइफ को इजी किया है अपना इनिशिएटिव लेके. That is why you are called as productive. अगर आप अपने बच्चों को ही ये बताएंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, कि you are responsible, आप हमारे नुकसान के भागीदार हो, आप हमारे लिए बोझ हो, तो आप बताइए उसकी सेल्फ इमेज पर क्या फर्क पड़ता होगा. मैंने अक्सर मॉम्स के ये डायलॉग सुने हैं कि मैं सारा दिन खड़े होके खाना बनाती रहती हूँ, तुम्हारे कपड़ों का ध्यान रखती हूँ, मैं थक गई हूँ तुम्हारी वजह से, मेरे को कितना मुश्किल लगता है काम करना. एंड डैड भी यही बोलते हैं, तुम्हें पता है कमाना कितना मुश्किल है, इट्स नॉट इजी. बहुत तुम्हें मिले हो ना यहाँ पे इतने सारे, इट्स नॉट इजी, कमाना बहुत मुश्किल होता है, तुम्हें पता लगेगा जब तुम कमाओगे. तो हम बच्चों को एक सेल्फ गिल्ट में डालते हैं कि तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं. देखो, हम काम सब अपने लिए करते हैं. ये इमोशंस हम बच्चों को ना बताएं तो बेटर रहेगा. ईश्वर ने आपको रहमत और बरकत दी है बच्चों के रूप में, तो आई होप हमें उनको नर्चर करना चाहिए रादर देन उनको बर्डन. इट इज वेरी क्रूअल वर्ड्स, राइट? दे आर very cruel words. So such kind of words, and you know, cruelty इतनी ज्यादा है. I counsel some of the parents who say this also, तू पैदा ही ना होता, या something like that. You get lost because of you have poisoned our life, something like that. So these are like poisoning words for the children. They will not react, दिखाएंगे नहीं वो, but अंदर से आपने उसकी self को poisoned कर दिया. So emotional connect तो रहा ही नहीं ना. इमोशनल कनेक्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं. वो बच्चा चाहेगा कि जिस तरह से, जैसे ही वो बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा ना, वैसे ही वो आपको छोड़ के चला जाएगा. आपने देखा होगा कई मॉम डैड अकेले रहते हैं. वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने अपने बच्चों के लिए उनके इनर सेल्फ को कहीं ना कहीं पॉइजन किया होता है. सो वी शुड नॉट नेवर एवर डू इट, राइट? बच्चे में व्हाट विल बी द बिहेवियरल, हाउ कैन यू फाइंड इट आउट? Behavioral outcomes will be hatred towards self and towards parents also. Lack of communication, emotional detachment, and what will be the outcome? Outcome will be self-guilt, self-harm. कई बच्चे escapism को एक अपना लेते हैं. They'll become drug addiction में चले जाएंगे, या alcoholic हो जाएंगे इस depression से निकलने के लिए. They'll stay out of the house only for longer period of time. घर नहीं आना चाहेंगे वो. So parenting, I understand it is difficult, but you need to ask this question. We all need to, as parents, we need to ask these questions. Are हमारे बच्चे responsible for them? Have they chosen to be born in your family? No. We have given them life. So it's our responsibility, moral responsibility, कि हम उनके लिए काम करें, but उनको कभी जताएं ना कि हम उनके लिए कर रहे हैं, right? Ciao. Next, emotional abuse. Now, see, it is very, very heartening to know that there is no training given for traumas, unforeseen events, deaths. कोई deaths
बच्चे के साथ, बच्चे घर में किसी की फैमिली मेंबर की डेथ हो गई तो बच्चे उसको कैसे डील करें, इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं किसी ने दी। कोई इलनेस है या डिवोर्स होना है मॉम डैड का या किसी का, बच्चा इस चीज को कैसे हैंडल करे, इसकी कहीं ट्रेनिंग नहीं दी हुई है। नो स्कूल विल टीच यू। सो बट अगर हमने ट्रेनिंग ही नहीं दी है तो हम बच्चों को कई बारी, टीनेजर्स को हम ऐसे ऐसे इमोशनली बड़े बड़े वर्ड्स, मतलब जिसको कहते हैं ना, कौन से वाले वर्ड्स होते हैं जो इमोशनल वर्ड्स, हम लोग बम्बार्ड करते हैं उनके ऊपर। जैसे अगर मैं मर गई तो तुम कैसे करोगे अपनी जिंदगी, इफ आई लीव यू हाउ यू विल फील, आई फील लाइक किलिंग माई सेल्फ, आई हैव सीन मेनी मॉम्स डूइंग दिस, एंड देन दे कम टू मी एंड देन टेल मी कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. So this is a trauma like of a thing that goes inside the child's brain. It is an emotional abuse to use emotional and sentimental drivel sentences. Don't make teenagers your vent for any problems. You must be facing a lot of problems, but teenagers, the students, they are not the vent for you. If you are insecure, find out a better solution yourself rather than imposing on the teenagers. They are not your vent. Absolutely not. बच्चों को दुख तकलीफ मैनेज करना सिखाना चाहिए हमें, जज्बाती स्टेटमेंट्स कभी भी नहीं देने चाहिए। नाउमीदी वी नर्चर आवर चिल्ड्रन कि वो बड़े होके आगे भविष्य में कुछ अच्छा करें। तो इफ वी विल गिव देम अनसर्टेनिटी, दे विल स्टार्ट बिलीविंग इन अनसर्टेनिटी कि लाइफ इज नॉट सर्टेन। नाउमीदी, फियर में जीना शुरू कर देंगे। लाइफ उम्मीद का दूसरा नाम है। आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री, लाइफ उम्मीद का दूसरा नाम है। उम्मीद है हम तभी तो जिंदा हैं, तभी तो हम एक साथ बैठे हुए हैं। अगर मुझे आज पता लग जाए ना कि तुमने 5-7 years में मर जाना है, तो शायद मैं आज ही उसी बात को सोच सोच के मर जाऊंगी। तो आई थिंक गॉड हैज क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल थिंग दैट वी डू नॉट नो व्हेन आर वी गोइंग टू डाई। कौन कब जाने वाला है, अच्छा है भगवान ने नहीं बताया। तो हम अगर इस अनसर्टेनिटी से जूझने का तरीका बच्चों को नहीं बताते हैं, कभी उनको फ्यूचर प्रिपेयर्ड करते हैं, तो प्लीज हम इस तरह की अनसर्टेनिटी से भरी हुई बातें, सेंटेंसेस, इमोशनल सेंटेंसेस बच्चों के साथ ना किया करें कभी भी। देयर आर मेनी सेंटेंसेस, टीन्स के सामने तो खासकर ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो एक, वी आर मेकिंग देम फ्यूचर प्रिपेयर्ड। हम उसको फ्यूचर के लिए, उसको भरोसा है कि कल होता है और कल ब्राइट होता है। तो अगर आप ही इस तरह से करेंगे तो उसका भरोसा खुद पर से तो खत्म होगा ही होगा, फ्यूचर पे भी खत्म हो जाएगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। सो आई एम नॉट सेइंग दैट वी ऑल डू इट इन intentionally, we do it unintentionally sometimes, हो जाता है ऐसा, but कोई बात नहीं, it's okay, it's life, it's like this only, it happens, कोई बात नहीं। So teenagers are not adults, they are adult like, so you need to understand the difference, right? It is very important to understand the difference. A teenager with a broken and poisoned personality will never be able to maintain good relationships in future. अगर मैंने जितनी भी problems आपको अभी बताई हैं, हम इसको नहीं ठीक करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी डैमेज इतना हो जाता है कि वो कभी जिंदगी में मैनेज ही नहीं कर पाएगा, गुड रिलेशनशिप बना ही नहीं पाएगा। फिर वो रिश्तों में कमजोरी, डिवोर्स केसेस, अकेले रहना, अकेलापन, बस यही चीजें चलेंगी आगे। So I'm sure none of us would like our teenagers to become like this, to land up in a future like this. It is time for all of us to repair the loss that we have already made and to save the children to give our teenagers a bright and a better future. I have changed my parenting style too. I will not say that I was born with parenting style, नहीं, मैं भी अपने मम्मी पापा के बताए हुए बाबा आदम के जमाने के तरीके इस्तेमाल करती थी अपनी। I have a teenager daughter and a toddler also, so there is a huge age difference. और मैं वही तरीके अपनाती थी जो मेरे को मॉम डैड ने से सीखे हैं हमने, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। Then I landed up into parenting and I got to know that what are the areas that I was wrong in. Then I have mended my parenting style and I could see the result within 2-3 months only. 2-3 months भी ज्यादा हो गया। टीनेजर के साथ तो ये आपको immediate results मिलते हैं, टॉडलर्स के साथ भी। So we should be focused on grooming, right? Sorry बोल दो, जहां जहां आपको लगता है कि आपने गलती की है, go and say sorry. Go and say sorry. It's okay to say sorry. And please, dear parents, upgraded version of parenting is required. It is very, very much important that we must upgrade ourselves so that we learn. See, for upgradation, what I was telling, I am coming up with a very, very beautiful workshop that is for teenagers only. And the best part of this workshop is that it is designed in a special manner
that both the teenagers and the parents can sit together and watch it. टीनेजर और उनके मॉम डैड दोनों के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया. इट इज फॉर 4 days स्पेशल प्रोग्राम. And 90 minutes of class will be there every day. I won't say class, it will be a fun learning interactive session kind of a thing in which you will learn so many things. What all you will learn in this session will be developmental milestone of teenagers, brain and hormones functioning, then screen addiction, which is a big challenge these days, screen addiction and the solution for it, ways to maximize the potential that I told you. Every child is born with इनफाइनाइट पोटेंशियल, सेल्फ पोटेंशियल. हर बच्चा सेल्फ लव और सेल्फ पोटेंशियल के साथ पैदा हुआ है. ड्यू टू एनवायरमेंट वो कहीं ना कहीं उस पर मिट्टी पड़ती जाती है और बच्चा डिप्रेशन में, सप्रेशन में चला जाता है. तो उस अपनी हिडन सेल्फ को कैसे पहचान के बाहर लाना है, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल एंड देन यू कैन शो अप टू द वर्ल्ड व्हाट यू रियली आर. And the best part of this program is that we are going to tell the teenagers and the parents how to balance studies, how to balance emotion, and how to balance relationships as well. So registration charges we have kept very minimum. It is just kept 2,000 rupees for every individual to have it, because I want this mission to go further, and this is my mission to create at least 1 lakh parents and 1 lakh students to know that what they are meant for, to make a better human beings, and to make a better society who is independent of their own decisions. See, every growth, every change comes with a price. And it is not always in terms of money. Price is not always in terms of money. It is in terms of your time. It is in terms of your commitment. It is in terms of your ability to change. And if we believe in upgrading, if we believe in reinstalling, if we believe in updating our skills, then this workshop is for you. If we believe in building strong relationship and connection for lives, this workshop is for you. If we want to understand that why teens behave in a certain manner, why they are the way they are, this workshop is for you. If you want your teen to be confident in all spheres of life, then this workshop is for you. If you want your teenagers to be emotionally, physically, mentally, and spiritually aligned, then this workshop is for you. So please join me. Don't think too much. Don't think too much. We keep feeding our down the neck, our body, we keep feeding our body down the neck all the time. The problem is we don't feed our body up the neck. So this is the time when you can feed your body up. Let's do the reframing and rewiring of your brain so that your teenagers and you have better connection and communication for lives. So these are, my dear friends, these are the payment options. You can note it down somewhere, because or you can take a screenshot of this screen right now. Join me in this mission to create awareness and transformation. See, information बहुत सारी है. So you पूरा दिन Google पे लगे रहो, you will get so much of information. I call myself a transformation coach. I do not call myself an information coach, because information is free and information is everywhere. But information will bring transformation, that is true or not, ये आप सबको पता है. कितने कितने बाबाओं की आप मोटिवेशनल स्पीचेस सारा दिन सुनते हो, क्या आप में ट्रांसफॉर्मेशन आई? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैंड होल्डिंग चाहिए, मेंटर चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट कम ऑन योर ओन. Many are there who can bring transformation on their own. I am very happy for them. They can. But if you want me to hold hand and to take you to this journey, please join me. Be proactive and don't miss this opportunity to explore and discover your child's infinite potential which they are born with. This workshop is based on first come first serve basis. We are going to target a small audience group only, small learners group. We don't want so many people to be there. Only a smaller group will do. Last date for the registration for this workshop is 20th of March. After that, price will increase and it will be for 2,500. Once you have paid, please send us a confirmation message on our WhatsApp number. And I will be waiting for all of you and your teenagers in this workshop. Don't think too much, just join.
And we have not, as I've told you, we have not kept a big amount for this. So it will be a fun learning with parents and with teenagers. Thank you so much. It was wonderful to have you all here with me. This was a wonderful session, and I could see that there are many people who are there. And if you have any questions related to anything related to parenting or related to the workshop, which is upcoming right now, you can ask. You can unmute yourself and ask any question. Another window for 5 minutes is open for all of the enthusiastic parents and partners. Please ask any question that you have. You can unmute and ask anything. No questions? Okay, dear friends. So we'll be waiting for another such beautiful session on parenting very soon. Till then, bye-bye and happy parenting. Take care.